Hey guys, how are you doing? Today in this video we are going to talk about Mpox outbreak and center of crisis, symptoms, vaccination, what needs to be done, what is the position of India, so on and so forth. It will be a brief video on general science and technology. So here we go. Recently what happened actually in news again, why Mpox is in news. WHO has published multi-country external situation report, or you can say a status report, which was published on 9th November 2024. And report says the following. Let me find out my pen. Basic idea क्या है इसमें कि ये पता चला है ट्रेबल रिलेटेड केस ऑफ ट्रेबल रिलेटेड केसेस ऑफ क्लैड 1B का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा. क्लैड 1B is basically deadly viral strain. It is, what is this? This is deadly Mpox virus strain. Virus strain. तो इसके केसेस देखे गए कहां पर? एट ग्रेट ब्रिटेन. सो लेट मी राइट आउट अगेन. तो ये अभी आजकल ये केस कहां पर आए? ग्रेट ब्रिटेन में. एंड अपार्ट फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन एट नॉर्दर्न आयरलैंड. ओके, नॉर्दर्न आयरलैंड के अलावा जाम्बिया के अलावा जिम्बाब्वे. राइट, रिसेंट वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, जिम्बाब्वे. तो जिम्बाब्वे, राइट, जिम्बाब्वे. ओके, Zimbabwe. And apart from this, what WHO has published, it says that first time local transmission of Mpox was reported, right? Was reported outside Africa, basically outside Africa. तो ये आउटसाइड अफ्रीका, तो इसलिए फिर से एमपॉक्स क्या होगा, न्यूज में आ गया है. अभी ग्रेट ब्रिटेन में केसेस के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज व्हिच इज दिस ग्रीन दिस ग्रीन पैचेस, दीज ग्रीन पैचेस आर बेसिकली दे आर viral particle, viron, and the viron particles are of mpox, right? एंड अगर आप इस रिपोर्ट को देख पाओगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, देन बुरुंडी एंड युगांडा में द ट्रेंड इज बेसिकली इंक्रीजिंग, राइट? राइजिंग ट्रेंड बेसिकली. तो राइजिंग ट्रेंड in these three countries, DRC, Burundi and Uganda. However, there is good news also. तो WHO ने पता चला कि good news is what, basically part of DRC, which is again we are going to talk about, it was center of crisis, part of DRC in southern Kivu region, right? Southern Kivu region. This Mpox cases are plateauing. मतलब अब वो बढ़ नहीं रहे हैं, सैचुरेशन लेवल आ चुका है, ठीक है? प्लेटूइंग, राइट? ओके, इट इज प्लेटूइंग. तो ये गुड न्यूज है. तो हम शुरू करते हैं और शॉर्ट पे रखेंगे वीडियोस को. एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेंटर ऑफ क्राइसिस. वेयर इज द सेंटर ऑफ क्राइसिस? अगर आप ये मैप देख पा रहे हैं तो दीज आर कंट्रीज लाइक ओके, देखो ये रेड वाला रीजन है, जो दिस रेड रीजन, it is basically, it represents DRC, Democratic Republic of Congo. This is DRC region. और जो DRC region है वो यहाँ पर है, Democratic Republic of Congo, at the center of, it is the center of the Africa, right? Okay, this is Africa, and Africa में ये DRC है, Democratic Republic of Congo. This is eastern part of DRC where this virus flourishes, right? तो ये वाला रीजन जो है आपको जनवरी 22 में यहां पर केसेस देखे गए, बहुत ज्यादा केसेस थे. देन इन नवंबर 2022, देन 23, अगेन 23 एंड अगेन इन 24, राइट? डीआरसी में ये केसेस ज्यादा देखे गए. फिर हम बात कर रहे थे बुरुंडी की, तो बुरुंडी में भी ये वाले केसेस, दिस कलर, दिस ग्रे कलर, दिस बुरुंडी में भी केस देखने को मिले हैं. एंड युगांडा ऑल्सो, युगांडा में भी रिसेंटली देयर इज राइजिंग ट्रेंड, राइट? तो ये वाला केस था. इसी कारण WHO ने क्या किया है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. तो WHO ने क्या किया था? सो लेट मी राइट इट. WHO has again in August 2024 declared what it does. It declared Mpox as PHIEC. What is PHIEC? It simply means public health. Okay, public health. Let me write it. Public health emergency of
इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, इंटरनेशनल कंसर्न। ओके, तो इसका मतलब है ये पैंडेमिक में कब तब्दील हो जाए, नोबडी नोज। तो यही मतलब था इसका कि भाई प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, और इसको इसलिए सही कर दो, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ओके, दिस इज द आइडिया। ओके, तो जो सेंटर ऑफ क्राइसिस था वो कहां पर है, बेसिकली पैंडेमिक और एंडेमिक क्या कहें इसको। तो अभी तो ये 121 कंट्रीज में रिसेंट रिपोर्ट थी जो WHO की, 121 कंट्रीज में इसके केसेस देखने को मिले। इट इज लॉन्ग फ्लरिस्ट, it is long flourished, this is long flourished in DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, राइट। उसके अलावा ये उसके अलावा 121 कंट्रीज में ये पहुंच चुका है। मोर देन, अगर मैं DRC की बात करता हूं तो DRC में कितने, मोर देन 18,000 केसेस एंड मोर देन 500 डेथ वर रिपोर्टेड। ओके, मोर देन 18,000 केसेस with 500 plus death, 500 plus deaths were reported, deaths were reported। ओके, तो सेंटर ऑफ क्राइसिस कहां पर है, इन DRC, राइट। सेंटर ऑफ क्राइसिस के अलावा इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है, ईस्टर्न DRC, ईस्टर्न DRC में देयर इज वन प्लेस कॉल्ड गोमा, राइट, गोमा। तो गोमा में क्या है, बेसिकली सेंटर ऑफ क्राइसिस कहा था, गोमा था। व्हाई गोमा, देयर आर मेनी रीजंस एंड वन प्रॉब्लम इज दिस, देयर इज guerrilla warfare, war is raising, this region is raised by guerrilla war, conflicts between military insurgent group, basically. So guerrilla war is because of there is conflict going on between, so conflict between military insurgent, okay. So this is the problem, and due to war, what is the problem, the serious problem is children, basically. So who are vulnerable, children are particularly, children are vulnerable, children are at higher risk. Why? Again, because of two things, malnutrition and because of war. जब भी war होता है तो malnutrition के अलावा there is one problem, malnutrition के कारण कुछ diseases हो जाती है। For example, cholera outbreak, recent cholera outbreak जिसको हैजा भी बोलते हैं, watery tools, diarrhea, basically vomiting, diarrhea, dehydration, severe dehydration which can cause, which can leads to death, and measles outbreak also. तो measles outbreak. So for entire world, this region, the eastern DRC region is, cause of serious concern, right? Then there were cases at Sweden, Pakistan, few cases in India also, recently in Great Britain. There are so many, things related with this crisis, right? What we are going to talk today, what exactly Mpox is. So let's talk about Mpox is. क्या Mpox एक, this is basically pox virus. तो अगर आप लोगों ने पॉक्स वायरस के बारे में पढ़ा होगा, और ये जनरल क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी में पूछा जा सकता है, तो पॉक्स वायरसेस आर बेसिकली व्हाट, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पस फील्ड, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पस फील्ड ब्लिस्टर्स, राइट, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पस फील्ड ब्लिस्टर्स। जो छाले होते हैं उनमें क्या होते हैं, ब्लिस्टर्ड, पस भरा होता है, पस फील्ड ब्लिस्टर्ड, एंड देयर आर कैरेक्टरिस्टिक रैसेस। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, तो लेट मी टेल यू समथिंग। कैरेक्टरिस्टिक रैस किसके हो सकते हैं, सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक रैस किसके हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक रैस किसके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू नो अबाउट स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स को 1980s में इरेडिकेट हो चुका था दुनिया से बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ वैक्सीन, एंड वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय दिस गाय एडवर्ड जेनर, and Edward Jenner is also known as father of vaccination, right, father of vaccination, read about it, father of vaccination। और ये आपको मिल जाएगा NCERT में, बेसिक NCERT, whenever you read basic NCERT you must be knowing about this smallpox, eradication of vaccine for smallpox and then eradication of this smallpox, okay। Chickenpox have almost same type of characteristic races. Chickenpox, they are pus, pox viruses, and pus filled basically blisters, they are characterized by pus filled blisters। Let me write it again, so what I want to write here, तो यहां पर हम लिखेंगे pus filled blisters, okay। तो if my writing is clear on tab, तो आपको अगर ये दिख रहा होगा, chicken pox, then again syphilis, syphilis is, what is syphilis basically, is there anyone who knows about gonorrhea, syphilis, skin to skin contact, it is STD, sexually transmitted disease, skin to skin contact के कारण हो जाता है, and it is sexually transmitted disease, gonorrhea and syphilis both basically they are bacterial infection, and syphilis is
इट कैरेक्टराइज्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक रेसेस, तो पता नहीं चल पाएगा कि एमपॉक्स है कि नहीं है, तो टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। देन अगेन वेरिसेला जोस्टर, मीजल्स, मीजल्स आपको पता है खसरा जिसको बोलते हैं, मीजल्स इज वेरी डेंजरस। स्केबीज इज आल्सो देयर, अपार्ट फ्रॉम स्केबीज हैंड एंड फुट माउथ, हैंड एंड फुट, hand and foot mouth disease, you know, mouth disease, all of these diseases have these kind of characteristic stresses। और इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक रेसेस होते हैं, पस्पिल ब्लिस्टर्स होते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा एमपॉक्स है और कौन सा एमपॉक्स नहीं है, राइट। ओके, सो एमपॉक्स इज somehow related to smallpox, okay, there is some difference, technical difference, clinical difference, but it is related to smallpox also, okay। ट्रांसमिशन का क्या तरीका है इसका, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड बाय द वे, तो ट्रांसमिशन, mode of transmission, again sexual contacts are there, it is STD। transmission is basically routine, you know, routine close contact, तो आपको पता होना चाहिए routine close contact। if a person come in close contact with a patient, it gets, you know, it will be infected, he will be or he or she will be infected with this, you know, mpox virus, right। तो close contact basically, for example close you know, close contact includes clothing, bedding, और क्या क्या हो सकता है, sexual contact is one of the main concern, sexual contact, okay। apart from this pregnant, and therefore pregnant women and kids are at high risk, and kids are particularly vulnerable, they are particularly vulnerable। तो ये एमपॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो वल्नरेबल, दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, राइट। ओके, तो जो अब हम अगर बात करते हैं तो ये एमपॉक्स के बारे में बात होगी। बेसिकली इसमें क्या होगा, सेम टू सेम, इसमें ठंड लगेगी, इसमें जैसे सिर में दर्द होगा, हेडेक, देन फीवर, एक्सॉशन, सोलन लिम्फ नोड्स, मसल एंड बैक पेन एंड लीजन्स पड़ जाएंगे, घाव हो जाएंगे। और these, you know, these symptoms they arise between 2 to 4 weeks, right? It is called incubation period, right? So this is what about mpox. Now let's talk about vaccination. What is the status of vaccine? Simply no vaccination. Simple answer is what? No vaccination. You know, no vaccination. At least you can say no specifically target vaccine. Otherwise, no specifically target, you know, your targeted vaccine against mpox. Simple answer. If someone asks you, is there any vaccine against mpox? No vaccine, no specific, you know, no specific vaccine against mpox. However, so you can write in your notes, simple notes आपके काम आएंगे अगर कोई पूछे। However, vaccine against related pox viruses can be effective। related pox virus, you know, for example, अब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तो होती नहीं है क्योंकि वो तो इरेडिकेट हो चुका है, पर जो अदर पॉक्स वायरस होते हैं उनसे रिलेटेड जो हैं, जो रिलेटेड पॉक्स वायरसेस कैन हैव सम इम्यूनिटी, you know, immunity। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल, to DRC basically USA, Japan, okay, France, they are committed basically, France are committed, these countries are committed to provide vaccine, and earlier the provide or donate approximately 3 million doses to Africa, particularly to DRC, right? Okay, so this is the status of vaccine। All right, so now let's talk briefly what needs to be done। So in long run, understanding, you know, what needs to be done in long run, हमको क्या करना है, पैंडेमिक ना हो जाए, पैंडेमिक लाइक कोविड-19 ये सिचुएशन ना है, कोविड-19 जैसी सिचुएशन आए, तो इन लॉन्ग रन व्हाट नीड्स टू बी डन, in long run, as this diagram also show, you know, what needs to be done basically। So okay, so you know, genetic sequencing is required, genetic sequencing of mpox virus is required, so that
वैक्सीन कैन बी मेड अगेंस्ट इट, ओके, सो दैट वैक्सीन कैन बी मेड अगेंस्ट इट. उसके अलावा व्हाट नीड्स टू बी डन, अंडरस्टैंडिंग, ओके, अंडरस्टैंडिंग circulating strain, circulating strain of mpox, so understanding of, for example, clad 1b, recently it was in news, clad 1b is supposed to be deadly, deadly strain of this virus, mpox virus. उसके अलावा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? थर्ड वन, हाउ इट इज स्प्रेड, वी मस्ट नो हाउ इट इज स्प्रेड, इस चीज के बारे में भी हमको पता होना चाहिए बिफोर इट गेट्स डेंजरस, लाइक कोविड-19 अगेन, लोग इसकी सिचुएशन को कहां से कंपेयर कर रहे थे? कोविड-19 से. हाउ वी मस्ट नो हाउ इट माइट बी ट्रीटेड, हाउ इट माइट बी ट्रीटेड, ओके. तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ेगी. उसके अलावा कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत पड़ती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लोकल फैक्टर्स, हाउ लोकल फैक्टर्स अफेक्ट, local factors. These are important points which world must learn from the mistake. We have, for example, we have seen in the case of COVID-19, right? Lastly, we are going to talk about what is India's proactive approach, what is approach of India. So proactive approach simply means India has basically dedicated prompt detection, prompt detection of mpox virus. And for this purpose, what the country has done, there were currently 35 lab dedicated to equipped to test, or dedicated and equipped to test mpox, okay, mpox virus. उसके अलावा comprehensive strategy. So second one, comprehensive strategy. तो what India has done, comprehensive strategy, और comprehensive strategy में क्या है basically, let me tell you, expert group consultation, right? Expert group. तो expert group में on the lines of WHO, ICMR. What is ICMR? Basically Indian Council of Medical Research. Then AIIMS, All India Institute of Medical Science, and finally NCDC. What is NCDC? National Center for Disease Control, and NBVDCB. It is basically National Center for basically vector-borne. BPD is basically vector-borne disease control program, right? Okay, BPD simply means, तो अगर आप इसको पूरा नाम जानना चाहते हो तो this is important. It is generally in news and it can be asked in your examination. So let me write it fully. It is, this stand for National Center for vector borne, right? Vector मतलब जैसे mosquito borne, for example, mosquito is vector for example, malaria, dengue, chikungunya, so on and so forth. Vector borne diseases control program, okay? Control program. तो इनका एक्सपर्ट ग्रुप है. उसके अलावा enhanced, third one is enhanced surveillance. Apart from enhanced surveillance, laboratory preparedness. So government is working for this laboratory preparedness. For example, we have talked, preparedness, prompt detection. For example, this is, this is related to this one. Sorry, not this one, this one. तो जो हमने अभी ऊपर बात की थी फर्स्ट वाला में, this one, 35 lab dedicated and equipped to test mpox viruses, right? Okay, apart from this, awareness campaign also, government is also willing to awareness campaigns. People must know what to do, what not to do, because it is related to close contact situation, right? तो ये एक बेसिक आइडिया था mpox के बारे में, एंड आई थिंक आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, बिकॉज इट इज इन न्यूज, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, इट हैज टू डू विद द पब्लिक हेल्थ. So we wind up this class today here. Thank you so very much. If you like the class, don't forget to like and subscribe. See you guys again with another video, another topic. Thank you very much.